Good morning, students. Today we shall discuss about the effect of change of pressure. Okay, what happens when we provide pressure to a matter? So, what is the effect on the matter when we providing pressure? That we shall discuss today. In previous video, you have learned that when we are giving temperature, the particles will vibrate in more speed. So when we are providing heat, that heat was used to vibrate the particles of the matter. বা পদার্থর কণিকা গুড়িক গতিজ শক্তি কু বঢ়াইবার চেষ্টা করছিলা যদি আমি হিট প্রোভাইড করুলে সো টেম্পরেচর ইনক্রিজ কলে when we are increasing temperature or when we are increasing heat, when we are giving heat, then particles will get more kinetic energy and they were changing their states from solid to liquid and liquid to gases. In 0 degree centigrade, so water can exist in two different states. That is, one is ice and other one is water in 0 degree centigrade. So when you are giving heat to the dry ice or when you are giving heat to the ice, it is not dry ice but ice, then what happens? The particles will move very fast and it will be converted into liquid state, that is in water. When we increase more temperature after water, a time will come, what is samay asibo jetebale 100 degree temperature heijibo, when reaches to 100 degrees centigrade in thermometer, you will see that water will start changing its states from the liquid state to gaseous state. In that time, what happens? Temperature does not increases. We have learned about this in previous video. During this change of states, ଯେତେବେଳେ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢୁନି ବରଂ ସେହି ତାପମାତ୍ରାଟା ଗୁପ୍ତ ତାପ ଭାବରେ ଲେଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ଭାବରେ ହିଡେନ୍ ହିଟ୍ ଭାବରେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ମୋସନଟାକୁ ବଢେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି. So in this chapter we learned about the how temperature or how heat increase the particles vibration and change of state happens. Today we shall discuss the effect of change of pressure. आमे यदि चाप प्रयोग करिबा कोन हुए पदार्थर अवस्था कोन हुए पदार्थर पार्टिकल्स गुडी को कोन हुए से विषय आलोचना करिबा. So distance between the particles, constituent particles, you see distance between constituent particles determine the state of the matters. So when the distance between particles is very small, ଯେତେବେଳେ ଅତି କମ ତାଙ୍କ ଟୁ particles ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଯଦି କମ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ that is solid states. So when the distance between two particles is somewhere more, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ଯଦି ବେଶୀ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଟାକୁ କଣ କହିବା? ସାଧାରଣତଃ ଲିକ୍ୱିଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ଯୋଉଟା ଲିକ୍ୱିଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ର ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ କମ ଥାଏ ଆଉ ସେଗୁଡିକ କଣ ବୋହି ଯାଇ ପାରନ୍ତି. We have discussed earlier. ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିଲେ କଣ? Distance between constituent particles is when there is more and more. When there is less force of attraction between particles, that is called gaseous state. So we have already learned about three states of matter: solid state, liquid state and gaseous state. Today we shall see how pressure affects the distance between the particles. So what happens when you pressure apply to matters? Suppose you take gas. You cannot apply pressure to a solid state. এই ଆମ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଆମେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ. So when you apply on the
gaseous state, then we get the result. Keମିତି? When the temperature decreases or when you apply pressure on the gaseous state, there will be temperature reduce. So temperature will reduce when you apply the gas on the gaseous states. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ବା ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ପଦାର୍ଥର ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ. ସୋ ଟେମ୍ପରେଚର ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ବାଇ ଆପ୍ଲାଇଂ ଦି ପ୍ରେସର. ତ ଟେମ୍ପରେଚର ଯଦି କମିଗଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ମାନଙ୍କର जो भाइब्रेशन टा ऑटोमेटिक कमी जीव जहां हमें पढ़िथिले टेम्परेचर अधिक देले ताकर भाइब्रेशन हीट अधिक देले ताकर भाइब्रेशन बढ़ी जाए कि ताले जद हम टेम्परेचर कमाई देबा व्हेन विल डिक्रीज द टेम्परेचर और हाउएवर व्हेनेवर टेम्परेचर डिक्रीजेस सो पार्टिकल्स डिस्टेंस विल अफेक्ट नहीं कि जते बेले हमें तापमात्रा कमाई देबा बा कोनसी कारणरो चाप प्रयोग करिबा द्वारा यदि तापमात्रा कमी कमी जाउची ताहले निश्चित समानकर दूरता मध्य अफेक्ट पड़तो ताहले दूरता धीरे धीरे कमी कमी आसीबो. तो गैस हैव मोर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स व्हेन देयर विल बी लेस इन टेम्परेचर देन देयर विल बी डिस्टेंस विल बी धीरे धीरे कमी कमी आसीबो नहीं कि दूरता पड़िबोनी कमी कमी आसीबो देन दैट विल ट्रांसफर इनटू गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट. सो चेंज इन स्टेट अकर्स जेतेबेले हम हीट प्रयोग कले सेतेबेले मध्य तार स्टेट चेंज होतला सॉलिड टू लिक्विड होतला लिक्विड टू गैस होतला और जेतेबेले प्रेशर हम अप्लाई करूचु व्हेन वी आर अप्लाइंग प्रेशर ऑन द मैटर देन देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट आल्सो occurring. ओके सो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर व्हेन यू आर अप्लाइंग प्रेशर तो गैस चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट्स. ओके हैव यू लर्न अबाउट द ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बा शुष्क बरफ विषय तुम कहीं जानिच कि देख शुष्क बरफ कौन हुए जितेबाला कार्बन डाइऑक्साइड एक्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर यू ऑलरेडी नोन अबाउट व्हिच यू आर एक्सेलिंग इन द ब्रीथ. तमे निश्वास रे जे वायु छाड़ुच सेटा को कार्बन डाइऑक्साइड कहंती जोटा कि वायुमंडल को छाड़ुच. तो से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल रे थिबा कार्बन डाइऑक्साइड और द एटमॉस्फेयर the carbon dioxide exists in the atmosphere can be changed into dry ice by the pressure applying pressure. ताले सेटा कोन होची solid carbon dioxide एटा होची solid state को पळे आसीबो एटा gaseous state रे होची. so applying pressure carbon dioxide when we apply pressure on carbon dioxide that will change into solid carbon dioxide by एटा को ओडिया रे कहंती शुष्क बरफ. ओके by solid carbon dioxide. So what you learned in this period, what we learned today, pressure and temperature determine the states. आमे प्रेशर आउ टेम्परेचर गोटे स्टेट ऑफ द सब्सटेंस को डिटरमाइन करूची. जदि आमे प्रेशर अधिक भाବରେ ଦେଉଛେ ସେଟା ଆମର ଲିକ୍ୱିଡ ସ୍ଟେଟ ରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହେଇ ଯାଉଛି नहीं कि जदि आमे गोटे लिक्विड टाकू तापमात्रा प्रदान करूचे बा हीट प्रयोग करते से गुडिक गैसियस स्टेट मध्ये परिणत होउची. सो प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. सो नेक्स्ट वी शैल डिस्कस व्हाट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस हाउ दे आर चेंजिंग देयर स्टेट्स वी शैल डिस्कस. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हमें याको पूर्वरु मध्ये पढिचे कोन होय खाली हमें जस्ट गोटे रिमाइंडर मेन पॉइंट्स हिसाब रे देखिबा. व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड दैट इज कॉल्ड फ्यूजन. वेरी इंपोर्टेंट फ्यूजन कोन व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड कठिन पदार्थ तरल पदार्थ रे परिणत हबाकू फ्यूजन बा गलन मध्ये ओडिया रे कहंती. किंतु जदि से लिक्विड जदि सॉलिड को परिवर्तन हला जदि तरल पदार्थ कठिन पदार्थ रे परिणत होउची ताकू कहा जाए सॉलिडिफिकेशन. सेमती हमें देखिबा व्हाट इज सॉलिडिफिकेशन यू कैन आंसर इट. सो सॉलिडिफिकेशन इज ए प्रोसेस इन व्हिच लिक्विड चेंजेस इनटू
solid states. So next we shall see what is the liquid and gas, how they are changing their states on vaporization. So vaporization माने बाष्पीकरण तमे आगु जानिछो. So vaporization is a process in which liquid state changes into gaseous states. So in conversion to that, when gas changes into liquid, that is called condensation. So condensation is a process in which gas changes into liquids. Similarly, तमे आउ गोटे विषय वेरी इंपोर्टेंट जतले कर्पूर को ताप देउतलो सेटा सीधा सड़क बाष्प रे परिणत होउतला अमोनियम क्लोराइड आल्सो सेटा हम परीक्षा करी देखिथिले. So solid can be directly changes into gaseous states. Okay. So solid can be directly changes into gaseous state, that is called sublimation. Okay. ऊर्ध्व कोन सेटा कोन कहंती. So ऊर्ध्व पातन नहीं कि. So sublimation माने ऊर्ध्व पातन ओडिया रे हमें कहबा. So sublimation is a process in which solid directly changes into gaseous form. Similarly, gas can changes into solid, that is called deposition. So a deposition is a process in which gases changes directly into solid state. जेमति उदाहरण स्वरूप हमें कोन देखिले कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर देले सेटा सीधा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बा ड्राई आइस बा शुष्क बरफ रे परिणत हेउची. नेक्स्ट वी शैल सी the how you will be able to convert Celsius scale to Kelvin scale. ठीक है हमें देखिबा. ठीक है मन कर तो convert Kelvin scale to Celsius स्केल नहीं कि हमर टेम्परेचर मापिबा पाई तीनोटी थर्मोमीटर जोटा कि तमे जानि पारिबो तमे पढिबो. गोटे हला केल्विन स्केल नहीं कि के रे केल्विन स्केल आ गोटे हला सी रे सेंटीग्रेड स्केल. ओके सेंटीग्रेड स्केल. आ गोटे अछि प्ले सेटा होछि एफ कोन फ़ारेनहाइट स्केल. ओके. सो फ़ारेनहाइट स्केल तम शरीर तापमात्रा व्यवहार करिया पई जानिचो तम निश्चित भाव जानिचो. तमर साधारण तापमात्रा हमर शरीर केते 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. आउ नॉर्मल टेम्परेचर हमर शरीर होछि कोन केल्विन स्केल रे हम सेल्सियस स्केल रे कहले हमर होछि कोन 37 डिग्री सेंटीग्रेड. एटा होछि फ़ारेनहाइट स्केल रे 98.66 डिग्री फ़ारेनहाइट. सेमति हमें ई सेंटीग्रेड स्केल को केल्विन स्केल रे केमति भाबरे हमें बदलै परिबा से जिंस सिखिबा. सो एटा होछि हमर सो एटा को हमें कहि परिबा कोन सेंटीग्रेड स्केल सी. ओके. आ गोटे हला एटा कहि पाइबा हमें एफ फ़ारेनहाइट स्केल. आ गोटे नै जिबा हमें एटा नै जिबा के नै जिबा नै. सो केल्विन स्केल फ़ारेनहाइट स्केल सेंटीग्रेड स्केल. हमें सेंटीग्रेड स्केल डाबले एटा कोन 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमें देखि पाइबा को 100 भाग करा जाई परिबो हला. एटा होछि फ्रीजिंग पॉइंट नै कि फ्रीजिंग पॉइंट माने ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड रे हमर फ्रीजिंग पॉइंट बोले तमे आगु जानि छ. फ्रीजिंग पॉइंट हला कोन एट व्हिच हमर सॉलिड माने वाटर मॉलिक्यूल जोटा कि बर्फ सॉलिड 0 डिग्री सेंटीग्रेड रे बर्फ होइता से 0 डिग्री सेंटीग्रेड रे वाटर को कन्वर्ट हुए. सो फ्रीजिंग पॉइंट होछि कोन आप 0 डिग्री को ले परिबा. सेमति फ़ारेनहाइट स्केल रे फ्रीजिंग पॉइंट होछि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. सेमति हमर केल्विन स्केल रे 273.16 केल्विन बोले फ्रीजिंग पॉइंट.
सो फ्रीजिंग पॉइंट आम देखिले 0 डिग्री सेंटीग्रेड एटा होची 32 डिग्री फारेनहाइट आउ एटा फारेनहाइट स्केल रे आउ केल्विन स्केल रे 273.16 केल्विन जहा को हमें 273 बोली कहि परिबा हैला 16 न लिखले भी 273 लिखले भी भूल हेबो नाही सो एटा को 100 डिग्री पर्यंत एटा होची कोन मेल्टिंग पॉइंट बोले जानि छ गलनांक ए बरफ हमर जल बाष्प रे परिणत होजे सेमति जदी ठंडा बा सॉलिडिफिकेशन होवा पय सॉलिड स्टेट रे होची फ्रीजिंग पॉइंट होची 0 डिग्री सेंटीग्रेड एटा फारेनहाइट स्केल रे देखबले 32 डिग्री रु आरंभ होई कि ये जीवो 212 डिग्री फारेनहाइट पर्यंत हेले या भितरे केते भाग रहिला 1 एटा होची केते भाग रहिला हंड्रेड्स divided into 100 parts 180 parts रे डिवाइड करा जी 32 डिग्री रु 212 डिग्री पर्यंत नै कि हेले 212 रु 32 फेडी जाओ 2 रु 2 21 18 ओके सो 180 पार्ट रे व्यक्त करा जी सिमिलरली एटा 373 डिग्री केल्विन बोले एटा कोन एटा मध्ये 100 भाग करा है जी सो एठी देखो फ्रीजिंग पॉइंट बोले एटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड एटा 273 डिग्री केल्विन एटा हला 32 डिग्री फारेनहाइट बुझेला तो हमें जदी सेल्सियस को केल्विन रे करी चेंज करिया को चाहू जे ताहले हमें कोन करबा 273 डिग्री होची फ्रीजिंग पॉइंट बा 0 डिग्री सेंटीग्रेड जदी हमर 373 अछि हैला जदी हमर 373 डिग्री केल्विन अछि ताको हमें सेल्सियस स्केल रे केमती परिणत करिबा सो 373 रु कते फेड देबा 273 फेड देले आ जीवो 100 डिग्री सेंटीग्रेड सो केल्विन स्केल रु सब बेले कोन एटा होची कोन केल्विन स्केल एटा केल्विन स्केल रु 273 सब बेले माइनस कले सब्सट्रैक्शन कले so we will get in centigrade scale suppose 300 Kelvin say to 273 minus कर दबो बोले 37 डिग्री सेंटीग्रेड जेतले केल्विन आसीबो सेतले 273 फेड देले सेटा सेंटीग्रेड स्केल रे कन्वर्ट होई जीवो ओके मन रखो 273 सब बेले सब्सट्रैक्शन करिवो तापर सेटा सेंटीग्रेड स्केल रे आसीबो सेमती जदी 37 डिग्री सेंटीग्रेड देछि तार कोन करबा 273 मिसै देले हमें कोन करबा 300 केल्विन पाई परिबा सो सेंटीग्रेड स्केल रे 273 मिसेले केल्विन पाउछो केल्विन रु 273 फेड देले सेंटीग्रेड स्केल पाउछो ओके सो तमे जदी 0 डिग्री 32 डिग्री आ 273 डिग्री मन रखबो ताले तमरा सब इजी हेबो वर्तमान देखिबा सो हमें एबे देखिबा सेंटीग्रेड स्केल और फारेनहाइट स्केल को केमते हमें तार इंटर कन्वर्सेशन में चेंज करबा सो देखो C by 100 सेंटीग्रेड स्केल को 100 भाग रे व्यक्त करा जायछि सेमति हमर एठे कोन फारेनहाइट स्केल को 180 भाग रे विभक्त करा जायछि सो एठे हमें कोन करबा f minus 32 divided by 180 कर दबा f minus 32 कहीं करा गला यार 0 डिग्री आरंभ होला यार 32 डिग्री रो आरंभ हेउची तेनु f होची फारेनहाइट स्केल सेटु 32 डिग्री माइनस कले एटा को 180 भाग रे व्यक्त करा जायछि सेंटी सेंटीग्रेड स्केल को 100 भाग रे व्यक्त करा जायछि सो एठी हमें जदी रिलेशन बाहर कर दबा c = 100 टाइप को जीवो 100 by 180 into f minus 32 बा एटा को हमें काटी देले कोन पाइबा 5 by 9 f minus 32 एटा होची c सो जदी हमर c देछि ताले f बाहर करिवो f देथिले c बाहर करि परिबा हमें ओके जदी माने करो गोटे 37 डिग्री सेंटीग्रेड को तमे फारेनहाइट स्केल रे कन्वर्ट करिया पई चाहूचो ताले तमे केमती करबा हमर नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर होची 98.6 हमें जानि छे नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर केते 98.6 डिग्री
फारेनहाइट नहीं कि ताको हमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड देखेबा नॉर्मल टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड स्केल मन कर 37 डिग्री हमें पाइचे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पाइचे सी इज इक्वल टू 37 एफ मान हमर बाहर कते 98.6 बाहर दरकार ना सो हमर 37 दिया आइची सी इज इक्वल टू 37 मन कर देइछथि एफ केते बाहर कर ताले हमें कोन करबा सूत्र पकदबा 5/9 एफ माइनस 32 बा एठे हमें एफ माइनस 32 को गोटे पटे रखिबा इज इक्वल टू 9 टा पटे 37 रे गुणा हे जिवो आउ 5 टा हरा हे जिवो से पटु गले ओके सो एठे हमें केते पाइले 5 7 35 2 बळिला 7.4 5 20 9 4 36 9 को गुणी देबो सो एठे हमें 7.4 को 9 9 4 36 6 रहला 3 9 7 63 3 64 65 66.6 एठे कोन अछि f minus 32 is equal to 66.6 f is equal to 66.6 plus 32 is equal to 98.6 पाई गले so normal body temperature in our body is 98.6 ओके प्ले बहुत जिनस जान लो सो एगुडे को सब मन रखिबो नोट करिबो वॉच एंड एंजॉय माय वीडियो थैंक यू